Okay, so last time in the class we have actually discussed various this kinematic problems. Some few more kinematic problems are like, I mean, we have to discuss about the rapidity and the pseudo rapidity actually. But before knowing about this rapidity and the pseudo rapidity, you need to know about certain things. So what are those certain things? So you should know about light cone variables. Light cone variables. Light cone variables, right? I need anyone of you to unmute your mic so that I will be able to whether you are listening to me or not. को आप में से कोई एक जरा अपना ये on करें so that I will get some response from your side also. Okay. So what actually these light cone variables are? So you know that in many high energy reaction processes, जो भी हम high energy reaction processes होती हैं, so let me write it here. In many high energy reaction processes. अब high energy reaction processes क्या है कि where we are actually making the two beams to collide with each other. ठीक है? So when the two beams collide, they produce a large number of particles, and we are supposed to detect those particles, right? So in many high energy reaction processes, the detected particle, or I can say, a detected particle जो आपका होता है, we can identify that can be identified as originating from one of the colliding particles of the colliding particles, right? For example, what I mean by this, that means, for example, if I have some target particle A, and I have some particle that is at rest, and a projectile beam or a projectile, this particle collides with this A, and it produces some particle C plus some other particles X. Okay? So this A is target and it is at rest, and this is some projectile beam या incident beam जिसको हम बोलते हैं, this B, right? आवाज आ रही है मेरी? Okay, fine. So this is what I mean by high energy reaction process. So this is an high energy reaction process. So for example, let us suppose that this C particle जो आपका है, it is a detected particle. यानी this is a particle which we are supposed to detect. ठीक है? Now this C particle, it may be regarded as sometimes it can fragment from a target particle or sometimes from an incident particle. यानी this detected particle जो C particle हमें detect करना है, we can assume that this is coming out of the projectile beam yani B particle or sometimes from the target particle, right? So depending upon uh, depending upon whether this particle will get originate from or it will fragment from a projectile or a target frag, we will say that. So let me write it here, these points, so that you will I hope you are noting down all these things. अपना copy और pen आप साथ रखिएगा, ठीक है? And if you had any questions in between, you can ask. So this is C जो है आपका, this is I will write here, this is a detected particle. There will be a large number of particles produced in any reaction. I am not bothered about those particles. For example, I am representing them by X. So I will concentrate here on C. So what I am saying that the C may sometimes be considered as fragmenting from a incident beam this,
और प्रोजेक्टाइल या जिसको हम इंसिडेंट बीम भी बोलते हैं, इंसिडेंट पार्टिकल, projectile or incident, and it may sometimes be regarded as fragmenting from a target particle A. ठीक है, यानी ये C जो है sometimes it will fragment from a B or sometimes from a A. It's like if, for example, we have two balls. ठीक है, the two balls will collide and we will get some, they will break up and we will get the different balls. So for example, this portion of the ball, then it will come out of from this ball or it will come out from this ball. So depending upon whether this fragment will come from this or from, if it comes from the target, if sometimes it's coming up out of the target particle and sometimes it comes from the incident particle or the projected beam. So I will say that a reaction, वो reaction, a reaction in which the detected particle C, in which the detected particle C is described as, particle C is described as originating from the beam particle B, the beam particle B. यानी वो रिएक्शन जिसमें जो ये C पार्टिकल जो आपका है, if it is getting is described as originating from this particle B, जिसको हम प्रोजेक्टाइल या इंसिडेंट बीम भी कहते हैं, ठीक है, is called, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन, प्रोजेक्टाइल फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन. आई एम जस्ट रिपीटिंग इट अगेन. यानी फॉर एग्जांपल एक कोई रिएक्शन मेरे पास है इन जिसमें ये डिटेक्टेड पार्टिकल जो सी आपका है, आई एम डिस्क्राइबिंग दैट दिस सी पार्टिकल जो आपका है, इट इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस पार्टिकल बी, देन वी कॉल दिस पर्टिकुलर रिएक्शन एज ए टारगेट, सॉरी, प्रोजेक्टाइल फ्रैगमेंटेशन रिएक्शन. एंड द काइनेमेटिक रीजन और द रीजन ऑफ मोमेंटम, इसको हम बोलते हैं द रीजन ऑफ मोमेंटम of C, region of momentum of C, या kinetic region भी इसको हम बोलते हैं, the region of momentum of C in which this type of reaction is dominant, यानी in which this type of reaction is डोमिनेंट, यानी वो रीजन जिसमें ये रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, जिसमें आपका डिटेक्टेड पार्टिकल सी जो आपका इट एक्चुअली फ्रैगमेंट फ्रॉम दिस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल और द इंस्टेंट बीम. सो उस रीजन ऑफ मोमेंटम या उस काइनेमेटिक रीजन जिसमें ये डोमिनेंट हो, ये रिएक्शन डोमिनेंट हो, उसको हम टारगेट, सॉरी, प्रोजेक्टाइल फ्रैगमेंटेशन रीजन बोलते हैं. डोमिनेंट इज referred or is referred to as projectile fragmentation region. Is referred as a projectile fragmentation region. Now, where does this region lie? This region lies in the forward direction with respect to the beam. For example, आप ये beam आपकी आई है, ठीक है, it hits the target with जो region यहाँ पे है. So this region lies somewhere here in the forward direction. It lies in the forward direction. In the forward direction with respect to the beam axis. बीम एक्सिस. अब बीम एक्सिस कहां से होगी, यानी ये प्रोजेक्टाइल बीम आपकी आ रही है, सो दिस इज लाइक द बीम एक्सिस, यानी इट विल लाई समवेयर हियर इन द फॉरवर्ड रीजन. सो अगर ये रीजन में ले लो, दिस रीजन इज कंसीडर्ड एज अ फॉरवर्ड रीजन. सो द प्रोजेक्टाइल फ्रैगमेंटेशन रीजन जो आपका है, इट इज एक्चुअली द फॉरवर्ड रीजन, ठीक है, इन एनी हाई एनर्जी रिएक्शन प्रोसेसेस. नाउ दिस इज अबाउट when C is actually originating from your projectile beam. Similarly, वो reaction in which the particle C, यानी the detected particle C, in which the detected particle C
आई थिंक कोई स्टूडेंट ही है जो फोन कर रहा है. आई लेट मी. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर, इसी ना ऐसा जो प्रैक्टिकल कर में सर ऐसा मंडी उन मैक्सिमम. हेलो. यस सर. यार ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, अब मेरा हमारा वो भी चला गया. Okay, so I was saying about this reaction. आपका ये रिकॉर्डिंग पे दिखा रहा है? जी सर, रिकॉर्डिंग पे. Okay, fine. So I was talking about this reaction. B plus A gives C plus some X particle, right? So I say that if this detected particle originates from this projectile particle, we call that as reaction as a projectile fragmentation reaction. ठीक है? और जो रीजन ऑफ मोमेंटम है या काइनेमेटिक रीजन है उसको हम प्रोजेक्टेड फ्रैगमेंटेशन रीजन बोलते हैं. सिमिलरली इफ दिस पार्टिकल सी, जो डिटेक्टेड पार्टिकल सी है, इफ इट इज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम व्हाट नाउ टारगेट पार्टिकल, if C is originating from what target particle, if C is originating from target particle A, the reaction is called क्या चीज? टारगेट फ्रैगमेंटेशन रीजन. ठीक है? reaction is called target fragmentation region, and the region of momentum in which this kind of a reaction is dominant, उसको हम क्या बोलेंगे फिर? कोई एक तो अपना ये करो ना ऑन. यस सर. And the kinematic region in which in which this type of reaction is which reaction? In which this type of reaction is dominant is called target fragmentation रीजन. को हम टारगेट फ्रैगमेंटेशन रीजन बोलते हैं. लाइक आई सेड इन द प्रीवियस केस कि जो प्रोजेक्टाइल फ्रैगमेंटेशन रीजन आपका होता है, इट लाइज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दिस टारगेट फ्रैगमेंटेशन रीजन जो है, इट ऑलवेज लाइज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है? और आई कैन से दैट दिस रीजन ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज lies near the target particle which is initially at the rest. ठीक है? I will just explain it in a while with the help of certain examples. So far I will just summarize it what I have said, then I will move to the next part. What I said that I have some high energy reaction process. ठीक है? I have some high energy reaction process. This is a target particle, this is an incident particle or a projectile beam, this is a detected particle. ठीक है? So we assume that this C is sometimes originating from this projectile beam and sometimes it is originating from the target beam. वो reaction जिसमें this detected particle is considered to be originating from a projectile beam, उसको हम projectile fragmentation reaction बोलते हैं. And the region of momentum or the kinematic region in which this type of a reaction is dominant, उसको हम क्या बोलेंगे? Projectile fragmentation region. And sometimes this detected particle can be described as originating from a target particle. उस reaction को हम target fragmentation reaction बोलते हैं. और वो region of momentum in which that type of a reaction is dominant, उसको हम target fragmentation region बोलते हैं. Right? Now this is just as something like what I mean by the projectile fragmentation region and what I mean by the target fragmentation region. Now कोई भी kinematic reaction हमारे पास या कोई भी high energy reaction
हमारे पास होती है, लाइक फॉर एग्जांपल आई विल कंसीडर दिस जो हमने अभी ली है, b plus a gives some c plus some other particles x, राइट? जो काइनेमेटिक क्वांटिटीज होती हैं, द काइनेमेटिक क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? व्हाट आर काइनेमेटिक क्वांटिटीज? आई टोल्ड यू अर्लियर, लाइक आई हैव एनर्जी, आई हैव मोमेंटम, राइट? So these are usually we are talking this energy and momentum, इनको हम क्या बोलते हैं? They are the kinematic quantities, यानी the the physical quantities which we are knowing the kinematic conditions, kinematic properties of some particles, ठीक है? जो kinematic quantities that will be along the incident beam, for example ये particle यहाँ से beam आया है, it hits the target at this point, so we shall along the beam we designate them or we identify them as a longitudinal axis, ठीक है? इस पर फॉर एग्जांपल इस तरह से एक बीम आ रही, इट हैड एज अ पार्टिकल, जो ये बीम है इन दिस डायरेक्शन आई एम कंसीडरिंग दिस एज ए longitudinal axis and I designate it by z axis. Usually शेषनिवन इस तरह से हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसीडरिंग इट इन दिस डायरेक्शन इस एक्सिस, बट यहाँ पे हम क्या लेंगे, इट टू बी एज ए z axis, ठीक है? So जो kinematic properties along the direction of the incident beam, we will designate them as a longitudinal, we will call them, we will identify them as a longitudinal axis, and they have the properties quite different from those along the transverse अब कौन सी होगी यहाँ पे? If the particle is moving in this direction, the transverse will be along, for example if this is z, so this will be x and this will be y. तो ट्रांसवर्स जो प्लेन आपका होगा x and y plane, that will be a perpendicular to the beam axis. Perpendicular to z. Okay, right. Perpendicular to the beam axis. So what I mean here, ये जो kinetic properties, जो kinetic quantities होंगी along the direction of the incident beam, and we identify them as a longitudinal axis like this, जो मैं यहाँ पे example आपको दे रहा हूँ, like this. They have the properties quite different from those along the transverse directions. Along transverse directions means along x or either y, यानी both are perpendicular to the beam axis, यानी अगर beam या पर्ची इस direction में or coming out of the paper, अगर coming out of the screen, यानी like this. So this I am designating as a z axis, ठीक है? So we will designate this axis as the z axis, ठीक है? So for convenience, what I will use the same symbol to represent a particle, and it is 4 momentum. What I mean by this, you know that for example हम कोई particle लेते हैं, then I use it to what is the 4 momentum. The 4 momentum, you say that the 4 momentum is given by like its momentum p, 3 vector momentum, and energy IE. So for convenience, what I will do, you just keep your cameras on, ये off. कैमरा ऑफ रखो, क्योंकि ये मेरा डिस्प्ले पे आपके कैमरा ऑन करने से मेरा ये यहाँ पे आ जाता है और ये स्क्रीन मेरा गायब हो जाता है, ठीक है? सो हियर फॉर कन्वीनियंस आई विल रिप्रेजेंट जो पार्टिकल फॉर एग्जांपल मेरे पास आ रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा था a plus b gives c plus d. Now the kinematic x, this particle d जो है, we have some energy, we have some momentum associated with that particle. So what I am saying that for example usually जब हम आपसे in your earlier class में आपसे 4 momentum की बात कर रहा था, 4 momentum, so usually represented p mu, then you say that it's represented by 3 vector momentum and some energy E, right? So I'm saying that for convenience I will represent the particle and it is 4 momentum with the same symbol. हमारे पास particle कौन सा है? कौन सा particle है? particle को चाहिए? detected particle कौन सा है? C. So the 4 momentum, I will represent this 4 momentum as, I will represent it by C0, CT and CZ. Where C0 क्या है? C0 is energy. C0 is energy. Usually हम 4 momentum लेते हैं, 4 momentum P. So we represent it by P and E, right? So what P आपका क्या होता है? PX, PY, PZ, right? And energy is E. Now these two, since I have the motion of the particle, momentum of the particle along the Z axis, so I will consider this PX and PY as CT. That is what we call as a transverse momentum. So इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूँ PT, PZ and E. So instead of PT, PZ and E, I am representing it by C particle मेरे पास है, C0 is the energy, CT जो आपका है is transverse momentum,
ट्रांसवर्स मोमेंटम एंड CZ क्या है, इज longitudinal momentum. So the C0, CT and CZ will constitute my momentum and C0 will be the energy, right? ठीक है, is it okay? सिंपली मैं आपको से फिर से कह रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल हमारे पास फोर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, यू से दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी एंड द मोमेंटम एंड द एनर्जी, थ्री वेक्टर मोमेंटम. नाउ थ्री वेक्टर मोमेंटम, यहाँ पे पार्टिकल मेरे पास C है, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय C बिकॉज you can use the P or any other symbol, but I'm considering in my reaction the particle to be as C, so I can represent it by energy के बदले में C0 लिख रहा हूँ यहाँ पे. So C0 is the energy and the momentum जो यहाँ पे है Px, Py and Pz, इसको मैं दो कंपोनेंट में कर रहा हूँ. एक तो CZ आपका है यानी momentum along the longitudinal direction means along the beam axis, and CT means the transverse momentum. Transverse momentum is perpendicular, using momentum perpendicular, जो perpendicular होगा किसके, आपके longitudinal axis की, longitudinal momentum की. Now two linear combinations of this energy and the longitudinal momentum have special properties under the Lorentz transformation. Two linear combinations of C0 and CZ have special properties under Lorentz transformation. Under Lorentz transformation in the Z direction. In the Z. What I mean, that means what could be the two linear combinations of C0 and CZ? Linear combinations इनके क्या होंगे, C0 and CZ? One will be C0 plus CZ and other will be C0 minus CZ. This is what I mean by the linear combinations. Energy plus longitudinal momentum, energy minus longitudinal combination. So I'm saying that जो दो linear combination ये आपकी बनी है, they have the special this properties under Lorentz transformation. Or under Lorentz transformation, what I mean, for example, this is my frame S या F ले लूं मैं, and this is my another frame F dash, and this F dash is moving in the Z direction यहाँ पे with the velocity V, right? So I'm saying that these two linear combination, अगर हम इस particle का में जो detected particle C है, इसका linear combination of energy and the momentum, longitudinal momentum ले लूं, and this energy minus longitudinal momentum, they have a special property under Lorentz transformation. What are those properties? So एक quantity, इस quantity को मैं represent करूंगा C plus से, I will represent this quantity by C plus. So the quantity C plus is equal to C0 plus CZ. ठीक है? और इस quantity C plus is C0, this linear combination is called forward light cone. Forward light cone momentum. ठीक है? Of C, and C minus is equal to C0 minus CZ is called backward light cone momentum of light cone momentum. So ये combination जो है, मैं इसको मैं forward light cone momentum बोलता हूँ, इसको मैं backward light cone momentum बोलता हूँ. ठीक है? Is it okay? So if I have some particle that is traveling in the forward direction, अगर for example एक particle मेरे पास यहाँ पे है, it is traveling in the forward direction, it is forward light cone momentum, जो इसका forward light cone momentum यानी C0 plus CZ is always क्या, is always larger than C naught minus. then it is backward light cone momentum. Backward light cone momentum. ठीक है?
बैकवर्ड लाइट कोन मोमेंटम जिसको हम C माइनस से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी इसका फॉरवर्ड लाइट कोन मोमेंटम ज्यादा होगा एंड इस बैकवर्ड लाइट कोन मोमेंटम ज्यादा होगा। सिमिलरली दैट फॉर ए पार्टिकल ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जो पार्टिकल आपका ट्रैवल इधर कर रहा होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसका जो फॉरवर्ड लाइट कोन मोमेंटम होगा, इसका बैकवर्ड लाइट कोन मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होगा। बैकवर्ड लाइट कोन मोमेंटम is large and forward light cone momentum is small, ठीक है। बैकवर्ड लाइट कोन ज्यादा इसका होगा और फॉरवर्ड लाइट कोन मोमेंटम ज्यादा होगा। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मुझे लग रहा है आप थोड़ा गुम गए हो। आई विल जस्ट रिपीट इट अगेन। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग बिकॉज आई हैव सम showing some 5 minutes, then yeah, is it okay if you are understood, then I don't not need to repeat it. मैं सिमिलरली कह रहा हूँ आपसे, एक पार्टिकल में डिटेक्ट कर रहा हूँ, एक पार्टिकल यहाँ पे एक पार्टिकल आ रहा है, इट हिट्स द अनदर पार्टिकल प्रोड्यूसिंग सम अदर पार्टिकल C, और ये C पार्टिकल जो है, इस C particle, detected particle, I am saying that this can either originate from this particle target or it can originate from this projectile beam. If it originates from a target particle, I call that as a target fragmentation region, and if it originates from projectile beam, I call that as a projectile fragmentation region, ठीक है। Then I say जो ये detected particle होगा, जो इसका kinetic, now this particle जो detect आप हमें करना है, this particle is moving in any direction. I am saying that इसके साथ जो associate होगी kinematic quantities, kinematic quantities कौन सी होती हैं, energy और momentum की बात करते हैं। Now I am saying that ये particle C है, instead of writing it energy and momentum, I represent this particle and C, and I represent in terms of energy and momentum 4 vector. Energy momentum 4 vector कैसे, C0, CT यानी transverse momentum, and CZ यानी C0 is the energy, CZ is the longitudinal momentum, this is the transverse momentum, ठीक है। Then I say that I can take the two linear combinations of C0 and CZ, यानी C plus is equal to C0 plus CZ and C minus is equal to C0 minus CZ, right? मैं थोड़ा पास कर रहा हूँ, अजान हो रही है, ठीक है। मैं पास कर रहा हूँ 1 मिनट।